नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम इंडियन पॉलिटर एक इम्पोर्टाट चैप्टर इम्पोर्टाट एक्ट्स ऑफ इंडिया विषय डिस्कसन करवा। यही क्लास टी आगामी OSSC CGL मेंस एंड OPSC ASO महत्वपूर्ण अटे। यही क्लास कौन भी गोटे क्वेश्चन स्किप करंतु नहीं। चलतु क्वेश्चन डिस्कसन स्टार्ट करियो। Which historical act marked the first structural step by the British government to regulate the East India Company? यार आंसर होची रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यही रेगुलेटिंग एक्ट रे गवर्नर जनरल सहित चारिटा काउंसिल मिसिकी गवर्नर जनरल इन काउंसिल सृष्टि होइतिला। ता सहित प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल भावे शपथ नहीं वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, व्हिच एक्ट क्रिएटेड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ग्रेट ब्रिटेन टू मैनेज इंडियन पॉलिटिकल अफेयर्स? यार आंसर होची पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये पिट्स इंडिया एक्ट अनुसार कॉन्सेप्ट ऑफ डबल गवर्नमेंट स्टार्ट होइदिला। नेक्स्ट, इन व्हिच एक्ट कॉर्नवालिस got the power to override his council and became commander in chief of the army? आर आंसर होची एक्ट ऑफ 1786 जहाँकि कॉर्नवालिस एक्ट भावे जनाशुना। नेक्स्ट, व्हिच चार्टर एक्ट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड मोनोपोली विथ इंडिया एक्सेप्ट फॉर टी एंड चाइना ट्रेड? आर आंसर होची चार्टर एक्ट ऑफ 1813। मुझे जन दूसरी कि यही चार्टर एक्ट ऑफ 1813 रे क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज एलाउ करा जाइथिला इंडिया रे। यह सहित लोकल बॉडीज को पावर दे जाइथिला कि से माने इंडियन को ऊपर टैक्सेस इंपोज करि परिबे। नेक्स्ट, व्हिच लैंडमार्क लेजिस्लेशन एलिवेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल टू द स्टेटस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? यह आंसर होची चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये चार्टर एक्ट अनुसार ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली एंड होइतिला। ता सहित एही समय पीक ऑफ सेंट्रलाइजेशन होइतिला। आउ द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वाज टेकन अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which fundamental act officially dissolved the East India Company and transferred executive powers directly to the British Crown? आर आंसर होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 अनुसार प्रथम करी इंडिया रे वाइसरॉय पोस्ट स्टार्ट होइतिला। और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया होइतिले लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, अंडर व्हिच एक्ट drafted under Lord Macaulay was India's primary criminal code officially instituted? यार आंसर होची इंडियन पेनल कोड 1860। Which council act formally introduced the cabinet style portfolio system to Indian governance? आर आंसर होची इंडियन काउंसिल ऑफ 1861। यही काउंसिल एक्ट रे बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन स्टार्ट होइतिला। एथिरे इंडिया रु राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एवं सार दिनकर राव नोमिनेट होइतिले। ठीक सही भली लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्लस पंजाब प्लस बेंगल स्टार्ट होइतिला। नेक्स्ट, व्हिच की कमर्शियल स्टैट्यूट कोडिफाइज द एसेंशियल रूल्स ऑफ एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स अक्रॉस इंडिया? यार आंसर होची इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। Next, which fundamental act defines the admissibility of evidence and facts in all Indian courts of law? Our answer is Indian Evidence Act of 1872. Which council act famously introduced separate communal electorate for Muslims in British India? Our answer Indian Council Act of 1909। यह मध्य मर्ले मिंटो रिफॉर्म भाव में जनाशुना। मर्ले जी की सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थिले एवं मिंटो जी की वाइसरॉय ऑफ द स्टेट थिले, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थिले।
First Indian to be included in Viceroy's Executive Council was Satyendra Prasad Sinha. In this act, central provincial seat increased from 16 to 60. Next, which reformative act established the controversial system of a diarchy in Indian provinces? आंसर होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जहाँकि मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भाव में जनाशुना मॉन्टेगु जे कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थिले एवं चेम्सफोर्ड जे कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया थिले। नेक्स्ट, व्हिच अर्ली एक्ट रेगुलेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ मिलिटरी सीक्रेट्स एंड प्रिवेंट्स एस्पियोनेज अगेंस्ट द स्टेट? आंसर होची ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923। Next, which executive act served as the primary administrative blueprint for the post-independence Constitution of India? होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे सेंट्रल डायरकी इंट्रोड्यूस होइतिला। ता सहित ये प्रोवाइडेड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, पब्लिक सर्विस कमिशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन, फेडरल कोर्ट। आपण माने चाहिए यार थियोरी क्लास गुड़िक मो चैनल को जाई देखि परिवे। नेक्स्ट, व्हिच एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट स्प्लिट ब्रिटिश इंडिया इनटू द सोवरेन डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? यार आंसर होची इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। एही एक्ट अनुसार भारत विभाजित होई दुईटी नुआ कंट्री इंडिया और पाकिस्तान सृष्टि होइतिला। एही समय लास्ट वाइसरॉय थिले लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, व्हिच एक्ट वाज एनैक्टेड इमीडिएटली पोस्ट इंडिपेंडेंस टू रेगुलेट द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ फैक्ट्री लेबर्स? अर्थात फैक्ट्री लेबर हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर गोटे एक्ट आसला जहाँकि हूँ फैक्टरीज एक्ट ऑफ 1948। व्हिच एसेंशियल लेबर लॉ एंश्योर्स दैट वर्कर्स आर लीगली गारंटेड ए नॉन एक्सप्लॉइटेटिव मिनिमम लिविंग वेज? तार आंसर होची मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। व्हिच अर्ली एक्ट लेज डाउन द रूल्स फॉर द एलोकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड रजिस्ट्रेशंस ऑफ वोटर्स इन इंडिया? तार आंसर होची रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1950। व्हिच एक्ट रेगुलेट्स द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शंस, voting procedures and offences of candidates? Our answer is Representation of the People Act of 1951. Which act outlines the dynamic legal provisions for acquisition, termination and parameters of Indian citizenship? Our answer, the Indian Citizenship Act of 1955. Which penal legislation enforced the absolute constitutional prohibition of untouchability across India? Our answer, Protection of Civil Rights Act of 1955. Next, which social reform act codified rules regarding marriage, validity and divorce proceedings among Hindus? Our answer, Hindu Marriage Act of 1955. Which act provides a dedicated civil framework for solemnization of marriages regardless of religion? ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପାଇଁ ମାନେ रिलीजियन अनुसार रिलीजियन को बाद दे कि मैरिज से गोटे एक्ट आसला स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954. व्हिच मेजर लीगल रिफॉर्म स्ट्रक्चरली रीऑर्गेनाइज्ड स्टेट बॉर्डर्स अक्रॉस इंडिया प्राइमरली बेस्ड ऑन लैंग्वेज? माने लैंग्वेज अनुसार स्टेट बॉर्डर तैयारी से गोटे एक्ट आसला जहाँकि हूँ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. Which primary legal framework protects original literary, artistic and musical works within India? Our answer, the Copyright Act of 1957. Which act provides exceptional legal powers to Indian armed forces operating in declared disturbed areas? Our answer is FSPA Act of 1958. Next, which crucial reformative act comprehensively bans and penalizes the giving or taking of dowry? माने गोटे एक्ट आसला जहाँकि पेनालाइज करिवो जे कि डाउरी नब
ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଡାଉରୀ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1961. Which specific legislation governs the registration code of conduct and bodies of lawyers in India courts? Our answer thila Advocates Act of 1961. Which essential act mandates protected paid maternity leave for female employees in establishments? माने maternity leave पाइबे female माने ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା maternity benefit act of 1961. Which executive act remains the primary statutory basis for assessing and levying income tax in India? Answer Income Tax Act of 1961. Which act regulates and governs duties, tariffs and customs procedures for goods imported or exported? आमे जो goods टा import और export होबो सेतिपई गोटे act गोटे आस्थिला Customs Act of 1962. Which comprehensive act deals directly with the prevention and prosecution of unlawful and terrorist association? यहाँ पई मध्य गोटे act आस्थिला Unlawful Act in 1967. Which act regulates the grant and protection of technological patents and process design in India? Answer the Patents Act of 1970. Which legislation provides safe, legal and standard guidelines for medical termination of pregnancy in India? यहाँ पे गोटे आक्ट आसला MTP Act of 1971 अर्थात Medical Termination of Pregnancy Act of 1971. Which historical act enforces the strict protection of wild animals, birds and biological reserves in India? Answer Wildlife Protection Act of 1970. यही आक्ट जो आपण माने भलो भाबे मन रखिबे एहा बहुत एग्जाम रे एही क्वेश्चन आसीथिबार देखा जाइछ. नेक्स्ट Which procedural statute govern Indian criminal investigations, arrest, trial conduct and bails until 2024? Our answer is Code of Criminal Procedure in 1973. Which legislation was passed in 1974 to prevent and systemically control corporate and municipal water pollution? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା Water Act of 1974. Which historical act declared the absolute illegality and immediate termination of institutionalized bonded labor system? The answer is Bonded Labor System Act of 1976. Which legislation limits the state's power to divert pristine gazetted forest land for non-forest industrial purposes? Answer Forest Conservation Act of 1980. Which crucial environmental statute sets statutory standards to monitor and control industrial air pollution emissions? The answer the Air Act of 1981. Which strict legislation restricts and severely penalizes chemical processing, sales and trafficking of illegal narcotics drugs? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act of 1985. This law strictly regulates, controls and prohibits the unauthorized manufacturing, cultivation, possession, sale, transport and consumption of narcotic drugs like opium, cannabis and cocaine and mind-altering psychotropic substances. Next, which broad umbrella act was passed post Bhopal disaster to empower the center to safeguard all eco resources? And our answer is Environment Protection Act of 1986. Next, which consumer protection law protects Indian buyers against highly unfair, hazardous or exploitative trade practices? The answer Consumer Protection Act of 1986. Which act penalizes active public servants receiving illegal gratification, bribes or exhibiting professional corruption? जो माने कि करप्शन करथुले तांका पई गोटे एक्ट गोटे आसीथिला जाके होची प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988. Which rigorous statute protects Dalits and Adivasis from systematic socio-cultural hate crimes
and exploitation? The answer is SC and ST Act of 1989. Which regulatory legislation provided legal statutory powers to India's apex financial stock markets regulator? Answer: the SEBI Act of 1992. SEBI, the full form of SEBI is Securities Exchange Board of India. Which modern regulatory act replaced the stringent FERA to liberalize and manage foreign capital exchanges in India? Her answer is FEMA Act of 1990. FEMA अर्थात Foreign Exchange Management Act. Which fundamental cyber law acts as the primary legal framework protecting Indian IT, e-commerce and digital data systems? Answer: Information Technology Act of 2000. हमें देखिले कि टॉप 50 वन लिनियर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इम्पोर्टेंट एक्ट्स ऑफ इंडिया। आपन जदि वीडियोटी भल लगी थाए तेबे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिया पई भूलिबे नहीं एवं जो माने कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई प्रिपेयर होचंदी आपण माने आम वीडियो तांको सजेस्ट करि परिबे। वीडियोटी को कंप्लीट देखतिबारु धन्यवाद।